अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज मैं 86-12 के क्विज़ की तैयारी के लिए 100 से ज़ायद सवाल लेके हाज़िर हुआ हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी क्विज़ की, और इससे साथ साथ क्योंकि आपका भी फ़ायदा है, साथ मेरे चैनल का भी फ़ायदा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं कि सवाल ऐसे बोल्ड में लिखा हुआ है और साथ आगे 4 ऑप्शन जो हैं वो आपको शो हो रही होंगी, लेकिन इनमें जो दुरुस्त जवाब होगा वो ऐसे बोल्ड करके शो किया गया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एम्स ऑफ डैश कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन क्वालिटी एजुकेशन विल बी इंश्योर्ड इन स्कूल्स। तो दुरुस्त जवाब है एजुकेशन, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव्ड। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल डिस्पोजिशन असेसमेंट। तो इसके 4 लेवल्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन generates a hierarchical split between the knowledge authorities in profession and a dash group of people. Differential group of people, दुरुस्त जवाब है इसका। dash is about knowing what one stands for, तो दुरुस्त जवाब है इसका professional identity. The critic perspective emphasizes decision makers recognizing inequities in, दुरुस्त जवाब है इसका स्कूल और सोसाइटी। तो 2 ऑप्शन तो ज़ाहिर है आप नहीं टिक कर सकते, लेकिन आप 4th पे गौर करें तो वहाँ लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों जवाब दुरुस्त हैं। तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इस पे आप टिक करेंगे। प्रोफेशनल एजुकेटर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एट ऑल द टाइम्स, ये हर वक्त अकाउंटेबल होते हैं। एन एक्शन इज कंसिडर्ड टू बी राइट व्हेन all people treating fairly. A dash has special knowledge and skills due to their wide and special training in a particular field, और इसका दुरुस्त जवाब है a profession has special knowledge. The dash reported that mobile learning is ideally suited to allow reflection in action and to capture the spontaneity of learning moments. ये कहा था अबुसन ने 2009 में। Which of the following features represent the new paradigm shift in education? इसका दुरुस्त जवाब है traditional pedagogies. In dash writing, the energizing qualities that count are passion, sensuality, truthfulness, compassion, curiosity, insight, creativity, spontaneity, artistry and delight, और इसका दुरुस्त जवाब है journal writing. The countries which are politically dash and underdeveloped receive aid from World Bank. तो जो पॉलिटिकली अनस्टेबल होती हैं, अंडर डेवलप्ड मुल्क होते हैं, उन्हें एड मिलती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। सेल्स्टे एंड विटफोर्ड गेव हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, तो उसका दुरुस्त जवाब है 3 एलिमेंट्स। Nowadays the renowned philosophy of education leads towards the dash relationship of student teacher, और दोस्त जवाब है इसका फ्रेंडशिप, द फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स ऑफ स्टूडेंट टीचर। इफेक्टिव टीचर इज द पर्सन हु नोज हाउ टू कंट्रीब्यूट इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, तो दुरुस्त जवाब है इसका पॉजिटिवली, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। व्हाट इज द डिस्टेंस एजुकेशन, दुरुस्त जवाब है इसका प्लांट लर्निंग दैट टिपिकली अकर्स इन अ geographical location different from the source of the instruction. Definitions of teacher professionalism focuses on teachers dash qualifications such as being good at his/her job. Professional teachers professional qualifications.
a process in which individuals take the initiative without the help of others in diagnosing their learning needs, formulating goals, identifying human and material resources, and evaluating learning outcomes is called. सॉरी, इसका आंसर फिलहाल नहीं है, इसको आप सर्च कर सकते हैं खुद ही बुक से या गूगल से. इज़ अ फैसिलिटेटर एंड गाइड इंस्टेड ऑफ अ सैज ऑन द स्टेज. तो ये बात हो रही है टीचर की. टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर. हु डिफाइंड स्टैंडर्ड्स कनकेविंग द सेल्फ रिन्यूइंग पर्सन. और इसका दुरुस्त जवाब है गार्डनर. अकॉर्डिंग टू गार्डनर 2004, a dash is a vocation requiring advanced education and training. तो इसका दुरुस्त जवाब है प्रोफेशन. A profession is a vocation requiring advanced education. Sustainable development is dash in the absence of a political scenario of any country. Impossible. तरक्की इम्पॉसिबल होती है अगर पॉलिटिकल स्नेरियो जो है वो ना हो, सियासी इस्तेहकाम ना हो. Who said that professions impose restrictions in two ways, in terms of entry requirements and in terms of operation of the profession. तो ये चेरिस एंड स्कॉन ने कहा था. A code of ethics is basically a set of standard of professional conduct. इसका दुरुस्त जवाब है बी. TPAC model stands for टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज. और यहाँ इसमें T से है टेक्नोलॉजिकल, PA से पेडागोगिकल और CK से कंटेंट नॉलेज. Professionalization is a dash process by which any trade or occupation transforms itself into a true profession of the highest in integrity and competence. तो दुरुस्त जवाब है इसका साइकोलॉजिकल. Which is considered a political impact of globalization. और दुरुस्त जवाब है इसका branding, globalization and learning to consumers. The teaching council sets out the following standards that apply to all teachers. और ये सारे जो हैं वो अप्लाई करते हैं. दुरुस्त जवाब इसका डी होगा. प्रोफेशनल वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल कंडक्ट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सारे जवाब दुरुस्त हैं. तो ऑल ऑफ दीज दुरुस्त होगा जवाब इसका. इथिक्स आर द फंडामेंटल वेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स. Professionalism requires a theoretical as well as practical grounded expertise. इसका दुरुस्त जवाब है expertise. If you wish your peoples to show harmony, be helpful and sympathetic. Professional dispositions are characterized as the वैल्यू, ड्यूटीज, प्रोफेशनली शब्द जवाब दुरुस्त हैं इसके लिए. तो दुरुस्त जवाब इसका फिर होगा ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिप्रेजेंट्स द न्यू पैराडिम शिफ्ट इन एजुकेशन. और यह है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन फॉर ऑल. डैश इज़ अ फैसिलिटेटर. पहले भी बात हुई थी, टीचर फैसिलिटेटर होता है. द मोस्ट क्रिटिकल स्टैंडर्ड ऑफ इस्लाम आर गुड वर्क और परफेक्शन इन वर्क दोनों हैं. तो ये थर्ड ऑप्शन में ए और बी दोनों की बात की गई है, तो थर्ड ऑप्शन दुरुस्त होगी. द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द ऑब्जेक्टिव इनटू एक्चुअल प्रैक्टिस बिकम्स द एग्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. टीचिंग इज वे ऑफ ट्रांसमिटिंग टू अदर्स थ्रू केयरफुल प्लानिंग इन ऑर्डर टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव्स. तो ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. फीडबैक इज द सेंट्रल थीम ऑफ teaching learning process. Dash refers to teachers' independence to make autonomous decisions about what they teach to students and how they teach it. दुरुस्त जवाब है इसका professional autonomy. Which of the following is not one of the benefits of social media? कौन सा सोशल मीडिया का फ़ायदा नहीं है? तो mass media decreases prejudice and discrimination. Planning is defined as the process of management. ये मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है प्लानिंग जो. Virtues are a person's dispositions to act in a certain way and are cultivated by
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से virtues जो हैं बेहतर बनाई जा सकती हैं. Teachers must adhere to a firm code of ethics. Autonomy is one of the main focuses featured in dash characteristics. Professionalism इसका दुरुस्त जवाब है. The trait approach is based on the view that values of education should comprise predetermined dash can be taught. तो दुरुस्त जवाब है इसका trait. मैं थोड़ा तेज़ पढ़ रहा हूँ क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो आप हर सवाल को वीडियो स्टॉप करके अच्छे से पढ़ के उसका जवाब ज़हन नशीन कर सकते हैं. What change in education is necessitated by globalization? दुरुस्त जवाब है modernization of education. Political interaction affected in school-based leadership adversely. इसके बुरे असरात होते हैं. Which of the following feature represents the new paradigm shift in education? Repeat हो गया सवाल. Lifelong education for all. Good teaching requires proper dash, however it is not necessary as it depends upon what happened in the classroom. तो ये good teaching planning पे depend करती है. A code of ethics is basically a सारी options इसकी दुरुस्त हैं तो all of the above पे टिक करेंगे. The standards distinguish educators' professional responsibilities and are defined the assertions headings. 6 headings हैं ये. A dash has special knowledge and skills due to their wide and special training in a particular field, a profession. The care perspective emphasizes empathy and caring as well as the network of relationship. With the growing competition brought about by globalization, what is preferred by most employers in hiring their employees? तो यह selective. Professional ethics include dash standards of conduct expected by professionals in an institution. तो दुरुस्त जवाब है इसका community. This include community standards. इसको ethics कहते हैं. Nowadays, the renowned philosophy of education leads towards the dash relationship, friendship relationship. Professions emphasize on the dash of the relationship the professionals have with their clients. Fiduciary nature. Process involves decision making and judgment based practice. तो ये इसका दुरुस्त जवाब है career development. Management plays a vital role in the operation of employee and employer. Who said do good deeds properly, sincerely and moderately? ये saying है the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The care perspective emphasizes empathy and caring as well as the network of relationships. A profession should lay down morals, standards, values और all of these. चूँकि ये तीनों बातें ठीक हैं तो all of these दुरुस्त ऑप्शन होगी. Teachers are the true exchangers of values to new generation. What is the implication and globalization to the practice and experience of education? इसका दुरुस्त जवाब है commodification and the corporate takeover of education. ये इसकी एक पेचीदगी है. There are dash basic steps of career development. 3 basic steps होते हैं. In instructional strategy in which students work in small group to achieve the common goal is called cooperative learning. Teachers are only supposed to transmit knowledge, but they are responsible to develop students into good human beings. Those who have knowledge. Professional teacher workplace should be tidy and ordered, and his materials should contain only what is needed for his presentation. When dash are well prepared, teachers use maximum of instructional time in teaching. When lessons are well prepared,
The code of professional conduct for teachers should be applied to all teachers. Its purpose is threefold. The dash educationist of teaching reflects a certain wavering between professional and vocational conceptions. तो ये दुरुस्त जवाब इसका modern, the modern educationist. Sportive environment and controlling the native expression and emotions were identified in dash politics, in positive politics. The dash focus on the duty to serve the good of the community as a whole and not just one's own good or that of one's clients. तो दुरुस्त जवाब है इसका profession, the professions focus on. Although other professions provide transitional assistance for new members, historically the dash profession has ignored the support needs of its new recruits and has been described as the profession that eats its young. तो ये बात है education की. Those strategies and rhetorics employed by members of an occupation in seeking to improve status, salary and conditions is called professionalism. दोस्त जवाब है इसका professionalism. Who said the development of habits is a simply mechanical thing unless habits are likewise tastes, habitual moods of preference and regard, a powerful feeling of greatness. ये कहा था जॉन डेवी ने. The model TPAC consists of three main components for planning classroom teaching. और ये three main components हैं content, pedagogy and technology. और इसी बेस पे इसका ये नाम है. पहले भी इसका एक सवाल आ चुका था. A relational work skill is the term used to describe the ways in which professionals dash with each other. Professionals interact with each other. How the knowledge should be applied when providing the service to public can be well thought out, a moral issue, and it's termed professional. तो दुरुस्त जवाब है इसका ethics. Social interactions, spelling mistake है यहाँ पे, between student and teachers contribute to create healthy learning process. Composition of professional standards are, इनको कहते हैं knowledge, dispositions and skills. ये दुरुस्त ऑप्शन है इसकी. Any professional enterprise is deeply implemented in concerns and considerations. और दुरुस्त जवाब है इसका ethical. Management encompasses three elements. और ये three कौन से हैं? Planning, ये mistake है यहाँ पे. Executing, reviewing. After the adoption of the Universal Education on Rights in Dash, education has been considered as a basic human right in 1948. The opportunity to explore through spontaneous improvisation, typical group problem situation in which individuals are helped to become sensitive to the feeling of the people involved is called role play. Scalati and Whitford gave how many elements of teacher education? 3 elements. The following standards show the unpredictability and different variety of teaching and to serve professional judgment and practice. तो ये इसकी तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं. इंटेग्रिटी एंड कंडक्ट, राइचियसनेस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कॉलेजियलिटी एंड टीम वर्क, तीनों ठीक हैं. तो इसलिए ये इसमें कहा गया ऑल ऑफ दीज, के ऊपर वाली सारी ठीक हैं. तो इसका मतलब ये सबसे बेहतरीन बात है. तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगी. विच पॉइंट इज़ इन फेवर ऑफ द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर्स. और इन सर्विस एजुकेशन है. इन सर्विस एजुकेशन की सूरत में टीचर को रिवार्ड्स मिलते हैं, इंक्रीमेंट्स मिलते थे पहले. पोस्ट मॉडर्न doubt framed education as a modern project in need of questioning. The teaching is called a dash in words of Carr 1990 में उसने ये बात कही थी. तो professional activity, the teaching is called a professional activity.
According to Haile 2001, the nature of professionalism is improvement of service quality. Which authority claimed the quality of basic education in Pakistan? और ये ASER. Good teachers dash contacts between students and faculty. Encourage आना चाहिए था. The perspective emphasizes a person's moral character, virtue, the virtue perspective. A dash has special knowledge and skills due to their wide and special training in a particular field. उसका दुरुस्त जवाब है profession. Business dictionary defines jobs that held and work accomplished over a long period of time, which is continuous and systematic, is known as career. In written communication, keep your correspondence dash and precise. तो brief and precise दुरुस्त जवाब इसका. Professionalization is a dash process by which any trade or occupation transforms itself into a true profession of the highest integrity and competence. तो ये इसका दुरुस्त जवाब है social process है ये. Stands for outward oriented policies which are supposed to benefit all the countries of the world and also create certain problems in that process. Globalization. There are dash basic steps of career development. 3. Effective teachers know how to use their personalities to inspire and stimulate connection between students' previous experiences and the dash or subject matter. New theories of learning which shifted the attention from teachers and teaching to students. Following standards show the unpredictability and different variety of teaching and serve to professional judgment and practice. तो इसकी तीनों ऑप्शन ठीक हैं, तो डी पे होगा all of these. Fulfilling the promise on time is dash as this shows reliability, और इसका दुरुस्त जवाब है imperative. Time is imperative. Effective principals are ones who make a positive political climate across the school. A dash is a disciplined group of individuals who adhere to ethical standards are accepted by the public as possessing special knowledge and skills. जवाब है इसका profession. A profession is a disciplined group. Teachers' behavior should be dash, so always polite. According to Boyd, Lesh and V. Naylor, one of the best characteristics of effective teaching is achievement of highest pedagogical skills. तो ये लास्ट क्वेश्चन था. अब तक इतना ही. उम्मीद है कि इस क्विज़ की तैयारी से, इन सवालों की दुरुस्त जवाब याद कर लेने से, थोड़ा सा वक्त देने से आपका क्विज़ बहुत अच्छा हो जाएगा और आप 20 मार्क्स जो हैं इंशाल्लाह ले सकेंगे. फ़ी मानुल्लाह.